Hello, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, today we will learn about scalars and vectors. So, आज हम स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो स्टडी करने जा रहे हैं. स्केलर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Those physical quantities which require magnitude only for their explanation are known as scalars. For example, mass, time, distance, speed, volume, density, charge, entropy, heat, temperature, electric potential, etc. are the examples of scalar quantities. Take a suppose how mass is a scalar quantity. यहाँ पर हम मास को कैसे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि मास को कोई डायरेक्शन नहीं होता. अगर हम शॉपकीपर से कोई चीज़ लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 kg शुगर, तो हम उसको ऐसे नहीं कहेंगे भाई कि हमें 1 kg शुगर दो टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स ईस्ट, बट जस्ट हम कहेंगे कि हमें 1 kg शुगर दो. ठीक है. सो 1 kg, यहाँ पर 1 kg शुगर मीन्स 1 किलोग्राम of sugar. So here 1 is number and kilogram is unit. So magnitude is the combination of number and unit. Vectors को कैसे define करेंगे कि those physical quantities which require magnitude as well as particular direction are known as vectors or vector quantities. वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी नीड होती है. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, magnetic intensity, etc. These are the some examples of vectors or vector quantities. टेक सपोज अगर हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो इसका हम डायरेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे, मीन्स टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स साउथ. यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी हमें ऑब्टेन हुआ और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी. सो वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और पर्टिकुलर डायरेक्शन की नीड होती है. यहाँ पर देखें कि मैग्नीट्यूड 5 मीटर और
जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट या साउथ कोई भी हो। नाउ प्रॉपर्टीज, scalars can be positive but cannot be negative and zero. Vectors can be positive, negative and zero because they possess direction. Scalars are directionless while vectors possess particular direction. Scalars are added, subtracted, multiplied and divided by using simple mathematical rules. But vectors can be added, subtracted, multiplied and divided by using graphical method or vector algebra. Vectors are represented by an arrow which consists head, tail and magnitude. This is tail of arrow, this is head, and take a suppose this is 5 centimeter, so this is magnitude, means length of arrow gives magnitude because magnitude is equal to number into unit. Is tail is the starting point while head is the ending point of an arrow. Arrow is not a vector quantity but it is used to represent a vector.